Namaskar and welcome to Sansad Television. I am Vishal Dahiya and you're watching our show House Highlights. Let's begin with the headlines first. Rajya Sabha takes up the Jammu and Kashmir Appropriation Bills 2022 for consideration and return. Government says financial reforms have removed all impediments to the progress of the region. In the Lok Sabha, Union Minister Gadkari asserts India's roads will be as good as America by 2024. Enhancing road infrastructure will increase jobs in tourism and agriculture. Lok Sabha takes up demand for grants for Ministry of Civil Aviation for 2022-23. Members suggest measures to improve functioning. And after 12 uninterrupted sittings, Rajya Sabha adjourned during question hour today after disruptions by Trinamool Congress members. Let's now take a look at all these news in detail. The Rajya Sabha today took up the Jammu and Kashmir Appropriation Bills 2022 for consideration and return. Finance Minister Nirmala Sitharaman moved the bills in the upper house for consideration. Initiating the discussion, Vivek Tankha of Congress said economic activity has been severely impacted in Jammu and Kashmir. BJP's Anil Jain said NDA government has removed all the impediments to the progress of Jammu and Kashmir. He said all-round development is being ensured in the region by way of financial reforms. Ram Gopal Yadav of Samajwadi Party said representation of people of Jammu and Kashmir is a must. आपको समझ आएगा how much they want to invest in Kashmir. But to invest in Kashmir, you first have to create a climate for them. If there's no climate for them, who's going to invest? आप वहाँ शिकारे वालों से पूछिए, उनकी हालत क्या है? आप वहाँ के बोटमैन से पूछिए, उनकी हालत क्या है? आप वहाँ जो वहाँ पर जो घोड़े वाले हैं, पोनी वाले हैं, जो ढोते हैं सामान, उनसे पूछिए, उनकी हालत क्या है? बैक टू विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत 23,434 युवाओं को 407 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। माननीय सभापति महोदय, 22-23 के बजट में पर्यटन के लिए 604 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो कि पिछले बजट से 80 करोड़ रुपए अधिक है। टूरिस्ट सेक्टर में बड़े पैमाने पर वृद्धि दर्ज की गई है। 7 साल में पहली बार 2021 दिसंबर में 7 साल में पहली बार 2021 दिसंबर में सबसे ज्यादा टूरिस्ट आए, 1.43 लाख टूरिस्ट आए और किसी भी बड़े होटल में जगह नहीं मिल रही थी। 100% ऑक्यूपेंसी देखी गई। जहां रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए 71,615 करोड़ रखा गया है, वहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 41,365 करोड़ का सुझाव है। यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 67% और कैपिटल एक्सपेंडिचर 33%। 2/3 बजट का आपके डे टू डे खर्चे और ऐसे खर्चे में जा रहे हैं, जबकि 1/3 सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखा गया है। So more than 50% of the villages in Kashmir have no road and transport facilities. The supply of electricity is very dismal. So education facilities are poor. So it has been reported that around 75 government schools recorded that less than 30% result, and so in 10th class examination among them with 0% is 7. Sir. Promotion of tourism is another point. Sir, I have the tourism for J&K is very valuable, and I am very happy to see that an allocation of 604.77 crore has been made under capital expenditure for the year 22-23, which is very commendable again. वहाँ की वास्तविक समस्या कहाँ है, क्या है, वो वहाँ के लोग ही समझ सकते हैं। चाहे वो जम्मू रीजन के हों, चाहे वैली के रीजन को हों, उधर के हों, वहाँ की समस्याओं को समझ सकते हैं। क्या बजट में प्रोविजन किया? केसर की खेती धीरे धीरे खत्म हो जा रही, सारी दुनिया में उसकी मशहूर है। जो क्राफ्ट्समैनशिप है, दस्तकारी के काम होते हैं, लाजवाब कश्मीर के हैं, लेकिन अब जितना प्रोत्साहन मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा। डल झील देखने सभी जाते हैं, हम लोग जब गए तो दिन में कहा कि नहीं जाएंगे, क्योंकि देखने दिन में इतना गंदी लगती है, इतना गंदी है, उसमें एक आध मशीन चल रही होती है। मैं 500 एकड़
की जमीन है तुलमुल्ला कैंपस की, स्कैटर्ड है वो कैंपस, सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्कैटर्ड है। हम कौन सी शिक्षा को लेकर के क्या सोच रहे हैं? इतने वर्षों में क्या आपने किया वहां? क्या उनको जरूरत नहीं है? मैं स्कूली शिक्षा की बात करूं, 370 और कोविड मिलाकर के 32 महीने वहां स्कूल बंद रहे सर। बाकी देश में 4G 5G की अब बात कर रहे हैं, डिजिटल मोड ऑफ एजुकेशन कोलैप्स किया हुआ था। As on February 2nd, 22, unemployment in Jammu and Kashmir has remained at 15%, which is much higher than the average of 6.57% in the rest of the country, sir. In the budget of 2022-23, the total revenue budget for the social sector is 23,060 crores. That is only 0.47% on labor and employment. आज तक हम 2022 में हैं और डेटा बता रहा है कि अब तक 1739 कश्मीरी पंडित्स वापस वहां पे अपॉइंट हुए हैं और 1098 others were selected for the same jobs. ये जॉब्स बनने थे एक्सक्लूसिवली फॉर कश्मीरी पंडित्स, वो भी उनको वादा खिलाफी हुई है। बहुत खूबसूरत जगह, सब लोग कहते हैं बहुत अच्छी जगह, गुलमर्ग उसके इर्द गिर्द के गांव, पानी नहीं पीने का। इस मोदी जी की सरकार ने हर घर जल हर घर नल के कार्यक्रम के तहत उन दूर दराज के गांवों में पानी पहुंचा दिया है और उनको सबने जो है वो थैंक्स कहा कि आप प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करिएगा कि आज जिस पानी को हमारी बहनें, हमारी माँ दूर दराज वहां पे जाती थी और किसी तरह से झील से लेकर आती थी, पीने, कभी कभी वो पानी पीने वाला भी नहीं रह जाता था, आज हमारे घरों पे पानी आ रहा है, बिजली पहुंच गई है। जितने भी गांव है, गांव को रोड से जोड़ने के लिए आज हमारा जम्मू कश्मीर सरकार प्रयास कर रहे हैं। 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्कीम के द्वारा अभी 12 रैंक से 4th रैंक देश में जम्मू कश्मीर आए हैं। ये विकास नहीं हो तो क्या है? 12 रैंक से लेकर 4th रैंक प्रधानमंत्री की सड़क योजना पहुंचा है। Sir, in the employment sector, they have mentioned in last 1.5 years, they have made 11,000 new employments, but there is no data how many indigenous people are being offered in the employment. Urban सीलिंग एक्ट लागू होनी चाहिए, जिससे जो भूमिपति हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनसे छीनना चाहिए और जन लोगों को ये जमीन मिलनी चाहिए। Moving on, the run of last 12 consecutive full sittings of Rajya Sabha without forced adjournments due to disruption was interrupted on Tuesday when the House was adjourned by Chairman M. Venkaiah Naidu during the 0 hour as TMC members insisted on admission of their notice on price rise under Rule 267. The last 8 full sittings of the first part of this budget session and the first 4 sittings of the ongoing second part of this session were without such forced adjournments. The previous record of 13 full sittings of the House without forced adjournments was during the 249th session, which was the monsoon session of 2019. The Upper House on Tuesday mourned the loss of lives when China Eastern Airlines Boeing 737-800 crashed in mountains in southern China on a domestic flight flying from the southeastern city of Kunming to Guangzhou on 21st March 2022. The House conveyed India's stand of solidarity with the people of China in this hour of grief. 132 persons, including 9 crew members, reportedly lost their lives when a China Eastern Airlines Boeing 737-800 crashed in mountains in southern China on a domestic flight flying from the southwestern city of Kunming to Guangzhou yesterday on 21st March 2022. The loss of precious lives in this tragic incident is indeed painful and unfortunate.
This House joins me in expressing our heartfelt condolences as well as deep sympathy and sorrow on the losses suffered by the people of China and conveys India's stand of solidarity with them in their hour of grief. I request members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of those who lost their lives in this tragic incident. Let's now take a look at the developments in Lok Sabha on Tuesday. Road projects worth 62,000 crore rupees have been undertaken in the national capital to ease traffic congestion and tackle the problem of pollution. Union Road Transport Minister Nitin Gadkari informed this in the Lok Sabha on Tuesday, replying to a debate on the demand for grants for Road Transport and Highways Ministry 2022-23. He said it is his endeavour to make the road infrastructure in India at par with the United States by 2040. Highlighting the improvement in highway connectivity and road infrastructure, Gadkari said that it now takes only 40 minutes to travel to Meerut from Delhi as against the 4 hours earlier. 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये विश्वास मैं दिलाना चाहता हूँ। और मुझे पता है कि इसके कारण रोजगार भी निर्माण होगा, इसके कारण ग्रोथ भी होगी, इसके कारण एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल भी बढ़ेगा, इसके कारण एग्रीकल्चर ग्रोथ भी बढ़ेगी और उसके साथ टूरिज्म भी बढ़ेगा। दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में इसी साल हम दिसंबर के पहले कर सकेंगे। मैं अध्यक्ष महाराज आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही कि इस देश के लिए हमें इसका अभिमान है कि हमारे विभाग ने 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड ये कि 38 किलोमीटर पर डे रोड कंस्ट्रक्शन। कोई इसमें ऐसा कोई हमने कई गलत फिगर नहीं बनाई, जो रिकॉर्ड था उसी से बना। उल्टा वेस्टर्न कंट्रीज में 8 होगा किलोमीटर बनाया लेन तो बोलते 8 किलोमीटर बनाया। हम 8 किलोमीटर को 1 किलोमीटर कह रहे, जो यूपीए सरकार में पद्धति वैसी पद्धति से बनाया। 38 किलोमीटर हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। दूसरा हमने किया अभी जस्ट 1 वीक एगो, वी कंस्ट्रक्टेड रोड लेंथ ऑफ 50 किलोमीटर सिंगल लेन इन 100 आवर्स, लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट DBM कोर्स रोड कंस्ट्रक्शन इन 100 आवर्स। ये दूसरा रिकॉर्ड हुआ 2.5 किलोमीटर लॉन्ग 4 लेन सीमेंट कंक्रीट रोड नियर वडोदरा इन 24 आवर। 4 लेन 2.5 किलोमीटर का रोड हमने केवल 24 घंटे में बनाया। बाद में 26 किलोमीटर सिंगल लेन बिटवीन रोड सोलापुर बीजापुर सेक्शन NH 52 21 घंटे में बनाया। आज ये जो रोड सेफ्टी की बात हुई, इसमें अभी हमने रोड इंजीनियरिंग में सुधार करने के लिए काफ़ी उपाय किया। ऑटोमोबाइल में इंडस्ट्री का भी मैं मंत्री हूँ। बहुत इंडस्ट्री मेरे ऊपर नाराज हो गई क्योंकि इकोनॉमिक मॉडल को मैंने 6 एयरबैग मैंडेटरी कर दी। तो उनने कहा कॉस्ट बढ़ेगी, तो मैंने कहा कॉस्ट बढ़ेगी तो बढ़ने दो, गरीब मरता है तो मरने दो और धनवान को बचाओ। ऐसा है क्या मतलब यहाँ? इसके बाद इस देश में इकोनॉमिक मॉडल छोटा से छोटा कोई नैनो मॉडल हो, हर गाड़ी में 6 एयरबैग्स लगेगी, ये हमने मैंडेटरी कर दिया। अभी ये बाड़मेर गया था, बाड़मेर जहाँ से पाकिस्तान दिखता था, वहाँ 300 किलोमीटर एयरपोर्ट नहीं है। आप उड़ान स्कीम में छोटे छोटे प्लेन लगा दो, चालू कर दो, तो इन लोगों का फ़ायदा हो सकता है। और हमारी जगह आपको फ्री ऑफ चार्ज विदाउट एनी रॉयल्टी आपको देने के लिए हम तैयार हैं। अगर ये होगा तो आप ज़रूर करिए, ये सब जगह हो रहा है। सर, हमने काफ़ी नई टेक्नोलॉजी लाई है और टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, मैं उस पर जाता नहीं। इलेक्ट्रॉनिक टोल का 97% कलेक्शन हो गया है। अब मैं GPS सिस्टम लाना चाहता हूँ, टोल ही नहीं रहेंगे। अब टोल नहीं रहेंगे तो कुछ अखबार वाले लिख देते कि टोल खत्म होगा। टोल नहीं खत्म होगा। इफ़ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। मुझे लोग पूछते टोल कब माफ़ करोगे? मैंने बोला तुम यहाँ 5 स्टार होटल में कार्यक्रम करते हो तो क्या फुकट में मिला क्या आपको? अगर फुकट में करना था तो रामलीला मैदान पे बैठना था। जब यहाँ बुलाते हो तो पैसा देना पड़ेगा। The Lok Sabha on Tuesday took up discussion and voting on the demands for grants under the control of Ministry of Civil Aviation for 2022-23. BJP MP Rajiv Pratap Rudy made a strong case for developing 30 to 40 greenfield airports in the country to cater to the requirement of ever-increasing number of air passengers.
Several other members, cutting across party lines, also took part in the discussion. मैं अपने मंत्री जी की जरूर तारीफ करूंगा, पार्टी ने जिसके लिए मुझे मौका दिया, क्योंकि ऑपरेशन गंगा जो पिछले दिनों यूक्रेन में बहुत बड़ी एक मुसीबत में हमारे खास तौर पे बच्चे, उसमें हमारे कुछ मंत्री भी, पुरी साहब, वीके सिंह और मंत्री भी गए, और हमारा एक मेंबर पार्लियामेंट, एक ही मेंबर पार्लियामेंट औजला साहब पोलैंड में जाके आए। जो आपने रोल अदा किया है उसके लिए आभार प्रकट करता हूं। महोदय, इस बजट में भारत सरकार ने 150 करोड़ रुपए की लागत से नॉर्थ ईस्ट की जो हमारे प्रधानमंत्री जी की कल्पना है कि वह भी भारत के मूल से जुड़े एक होलोंगी के में एक हवाई अड्डे की जो योजना है, उसका भी बजट 150 करोड़ रुपए इस बजट में रखा है। हमारी सरकार नागर विमान मंत्रालय और नागर विमान मंत्रालय के माध्यम से नागरिक उड्डयन के लिए किस तरह से, उद्योगों के लिए किस तरह से, पर्यटन के लिए किस तरह से हम अपनी सुविधा का उपयोग करें, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। People of Tamil Nadu are blaming that union government is completely ignoring Tamil Nadu. I again request the Honourable Minister to take steps to resume the service to Salem Airport and the expansion work and provide immediate service to all routes. This will greatly attract the businessmen, traders, merchants and the general public of Salem district, and it will help the economic growth of the district. I also request the further expansion of Coimbatore and Madurai Airport to the provide domestic and international freight services. Your 5-year budget for RCS from 16-17 to 21-22 was 4,500 crores. As of December 2021, only 2,100 crores, just 46% has been spent. So 50% of your 1,200 crore budget is RCS, and RCS itself is a non-starter. You yourself must be realizing this, otherwise why would you cut the budget down 40%? The Standing Committee report says there are huge delays in operationalizing because airlines are not willing to operate on RCS routes. So it is established beyond doubt that the ministry and indeed this government is not in the business of either running an airline or controlling commercial aviation in India. In which case, let the government do away with this ministry, merge it into a larger consolidated transport ministry, and instead concentrate on making life easier for those private players who are the only ones operating in the Indian airspace today. There's no government play, it's only private. Let's make life easier for private players. On observing the ministry budget, it has been noted that token provision of 10 lakhs has been made for Krishi Udan scheme, which was announced back in the year 2020 budget. Krishi Udan 2.0 focused on the transport, perhaps food products from the hilly areas, northeastern states, and tribal areas. It does not bode well that even after the completion of announcement of the scheme by the Honourable Minister Nirmala Sitharaman, during the budget, it has received just a token allocation. प्राइवेट एयरलाइंस खुद ही अपना फेयर डिसाइड करें। आपको सरप्राइज होगा, अचंभा होगा कि कभी कभी दिल्ली, दुबई, दिल्ली, लंदन से ज़्यादा किराया होता है श्रीनगर दिल्ली का। कभी कभी 50,000 तक श्रीनगर दिल्ली का किराया जाता है। वो इस वजह से कि रेगुलेट नहीं हो रहा। देखिए, हमारा एक वेलफेयर स्टेट है। अगर आपने ये कहा कि नहीं, जो हवाई चप्पल से हवाई जहाज़ की बात की, तो कैसे हो सकता है वो पूरा वो सपना, अगर आप रेगुलेट ना करें, ये रैशनलाइज ना करें जो एयरफेयर है। तो ख़ासकर जब हमारा जो नेशनल हाईवे 44 जब क्लोज़ होता है, तो उस वक्त एक्सप्लॉइट करके एक सिचुएशन, हमारे जो प्राइवेट एक्टर्स हैं, वो प्राइवेट एक्टर्स उसका लाभ उठाते हैं और वो एक्सप्लॉइट करते हैं सिचुएशन को, और 4 गुना 5 गुना वो किराया बढ़ाते हैं। तो इसमें अगर तभी आपका जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ये सपना है कि हवाई चप्पल से फिर हवाई जहाज़ और बाकी ये ऐसे जो है आम नागरिक के लिए, तभी वो पूरे हो सकते हैं। महामारी के बावजूद हमारी सरकार इस क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित है और रहेगी। हर संभव प्रयासरत है। विमानन अवसंरचना को मजबूत करने, जहां पर पुराने हवाई अड्डों पर सुविधाओं को तेजी से विस्तार हो रहा है, वहीं उड़ान स्कीम के तहत लगातार सुदूर इलाकों में 65 हवाई अड्डों का प्रचालन किया जा चुका है। During pandemic like COVID-19,
And the very reason, Ukraine war, why this government remains a mute spectator when private airlines charge for tickets at their whims and fancies. Sir, the day before Russia started the attack on Ukraine, the airlines were charging around 90,000 rupees to fly to India, and that's why many of the Indian students were not able to come back. Tirupati is a strategically placed with excellent access to regional airports. In the South India, additionally, Tirupati industrial potential in further standing by the dynamic leadership of the Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Jagan Mohan Reddy Garu, focus on developing the aviation sector in the state of Andhra Pradesh. Hence, I seek support the central government in this regard. Thank you, madam. उड़ान योजना के अंतर्गत वर्ष 2017 से लगभग 60 लाख लोग मात्र 2500 रुपए की टिकट पर यात्रा कर रहे हैं। इसी उड़ान यात्रा में अब 1000 नए मार्गों पर प्रतिवर्ष 1 करोड़ से अधिक लोग उड़ान भरेंगे। ऐसा ये भारत नया भारत है। उम्मीद करते हैं और माननीय मंत्री जी से भी लगातार हम संपर्क में हैं, कई बार मिल चुके हैं कि अप्रैल के महीने में जब जमीन हस्तांतरित हो जाए तो वहाँ पे टर्मिनल बिल्डिंग का काम प्रारंभ हो जाए और जो बीड में लाके पूर्णिया से वायु सेवा बहाल हो जाए, ये मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इसको सकारात्मक रूप में लेके पूर्णिया से वायु सेवा बहाल करने का काम करेंगे। With the objective of developing opportunities of aspiring pilots from our nation, I welcome the liberalist FDO policy introduced by the Airport Authority of India. I request that at least one flying training organization may be allotted for Tamil Nadu in the proximity of Madurai Airport in the southern Tamil Nadu. Policy that is NCAP of 2016, that too mainly aims at rampant privatization, and further 100% FDI is also permitted in scheduled air transport service. So the entire scenario of the civil aviation sector now open to the private sector, and even to the FDI is being allowed. In such a situation, the role of the ministry, of an independent ministry of such kind itself, is in question. That is the first point which I would like to make. सर, हमारे अमरावती में जिस तरीके से हमारे पूरे महाराष्ट्र में अभी हमारे मंत्री जी ने पिछले 2014 से 7 वर्षों में जलगांव, नांदेड़, नासिक, शिरडी, कोल्हापुर, सिंधुदुर्गा और अभी रिसेंटली गोंदिया जाके हमारे मंत्री महोदय के हाथ से एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किया। सर, हमारी अमरावती करों की बहुत बड़ी अपेक्षा है कि जो काम के लिए आपने 75 करोड़ रुपया हमारे एयरपोर्ट को अभी अलॉट किए गए हैं, उसमें से कुछ ही फंड सिर्फ हमारे राज्य को मिला है। Palakkad is the second largest industrial district in Kerala, having all types of industries including both central and state government public sector undertaking. The only IIT in the state of Kerala is at Palakkad. Palakkad is also the divisional headquarters of Southern Railway. The work on the industrial corridor between Coimbatore and Kochi via Palakkad is in progress. Palakkad is the gateway for reaching all materials to the state of Kerala from many parts of the country. That's all we have in this edition of House Highlights. We'll come back again tomorrow with the details of development in both houses of Parliament. Till then, keep watching Sansad Television. Thank you.